जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, वेलकम all of you. So we have to begin from verse number 31. Yes, 31. न च श्रेयोनुपश्यामि अथवा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे वीर्यं कृष्ण न च राज्यसुखानि च। So this is a verse from Bhagavad Gita, first chapter, verse number 31st. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. Purport. Without knowing that one's self-interest is in Vishnu or Krishna, conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. In such a blind conception of life, they forget even the cause of material happiness. Arjuna appears to have even forgotten the moral course for a Kshatriya. It is said that two kinds of men, namely the Kshatriya who dies directly in front of the battlefield under the Krishna's personal orders, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture, are eligible to enter into the sun globe, which is so powerful and dazzling. Arjuna is reluctant even to kill his enemies, let alone his relatives. He thinks that by killing his kinsmen there would be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight. Just as a person who does not feel hungry is not inclined to cook. He has now decided to go into the forest and live a secluded life in frustration. But as a Kshatriya, he requires a kingdom for his subsistence, because the Kshatriya cannot engage in themselves in any other occupation. But Arjuna has no kingdom. Arjuna's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. Therefore, he considers himself fit to go to the forest to live a secluded life of frustration. Hare Krishna. So, last time I think I gave you the chapter breakup, right? Yes. And somebody repeat it.
chapter 1 from 1 to 11, verse number 1 to 11 is preparation for war. 1 to 11. Yes. Okay, and then Then 12 to 20 is signs to victory. signs of victory. 12 to 20. 12 to 20. Then 21 to 27 is Bhagavadsal Krishna. Bhaktavatsal, Bhagavadsal. Sorry. one who is devoted to his devotees. And 28 to 46 is Arjuna's 5 reasons not to fight the war. 28 to 46. yes. So we are on the last section of the Gita Yes. of the first chapter, where Arjuna will justify his decision to not fight the battle, and he will give 5 reasons. So yeah, this is We discussed one reason. Yeah, we discussed 5. We finished with yeah. Out of them, the first reason, that is compassion, right? What is That is from verse number 28 to 30. So these 5 reasons will also appear in our life to justify why not to chant Hare Krishna, why not to attain satsang, or why not to become godly or devoted to spiritual culture. ये 5 कारण लेके लोग घूमते रहते हैं मार्केट में. हमें भगवान के पास नहीं जाना है, तो किसके पास जाना है? शैतान, evil. There are only 2 things: God and Satan, isn't? Bible तो पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत. You read Bible? very little. Good. जब बीमार पड़ा था तभी बुक पढ़ी थी बाइबल पढ़ने के लिए. What about Quran? कुरान. मैंने थोड़ा बहुत, मेरी नेबर थी मुस्लिम, छोटे में पढ़ती सुनी, और उसने मुझे अच्छी बातें सुनाई जो आज मैं सुन रही हूँ, वो वैसी नहीं है जिस वे में उसने मुझे. Okay. So either you are godly or either you are Satan. demonic. कुछ सॉफ्ट डेमोनिक रहते हैं, कुछ ग्रॉसली डेमोनिक रहते हैं. बहुत सारे लोग सॉफ्ट डेमोनिक रहते हैं, अपने आप को बोलते हैं मैं भी अच्छा आदमी हूँ, बट विद इन द हार्ट देयर इज लॉट ऑफ डेमोनिक टेंडेंसीज. नॉट टॉकिंग अबाउट यू. मैं खुद बोल रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ. यू आर डिवाइन. ओके. नहीं, हर एक के अंदर थोड़ा शैतान होता है, मेरे ख्याल से. ज्यादा शैतान, एकदम प्योर तो ज्यादा शैतान, थोड़ा सा भगवान, स्पिरिट. थोड़ा सा. नहीं. नहीं तो घर के जितने भी दीवार है वहाँ पे भगवान की फोटो लग जाएंगे. एक है वहाँ पे नरसिंह भगवान. पिकअप किधर लगा तो ऊपर नरसिंह भगवान बन जाएंगे. Okay. So this is the stage in Bhagavad Gita where Arjun has given the first reason. मैं क्यों युद्ध नहीं कर सकता? See here, battle is equivalent to serving the God. For Arjuna, service to God was to fight in the battlefield of Kurukshetra. हमारे लिए क्या है? कुछ भी हो सकता है. जैसे से for example, primarily in this age, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is prescribed duty or prescribed religion for human beings in the age of Kali. Kalir dosho nidhirajan hasti ka mahan gun kirtana deva Krishna se mukta samam param braja. This is in the Bhagavatam. Kali is ocean of nidhi, matlab ocean or storehouse. Kali is storehouse of problems. Kali dosho मतलब हमारे सबके अंदर क्या है? अनेक क्या बोलते हैं उसको? दोष को, समस्याएं, प्रॉब्लम या फिर कमियां, दुर्गुण, कमियां भर के हैं. इसीलिए it is not easy to become spiritual in this age. Isn't it? Extremely difficult.
Why? Because 99% people are going in this direction and you have to. We are telling you come this way. It's like a fish is swimming against the water current. It takes a lot of efforts. बराबर है कि नहीं? पानी ऊपर से नीचे बह रहा है और हम बोले ऊपर जंप मारो. It's actually extremely difficult. But in this age, those who take shelter of the chanting of the holy names of God, they can easily cross it. This is the secret, and that's why when Prabhupada went to America, and then he said, कभी अगर जाएंगे अभी जापान तो गए इस साल, कभी आप न्यूयॉर्क चले जाना टूर मनाने के लिए. गए तो वहाँ पर एक बड़ा पेड़ है, टॉम स्क्विंस पेड़ पार्क करके है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में. वहाँ पे एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे प्रभुपाद बैठे थे 1966 and he was just chanting Hare Krishna. That's it. And that's why today we are sitting here. And throughout the world right now at this point of time, so many satsangs are happening right now. So many temples, aartis are happening. आज बच्चों का जन्माष्टमी है हमारे इधर, किड्स के लिए टेम्पल में. आपका कितने साल का है? अरे बड़ा है वो तो. क्रिश 12. हाँ वो भी आ सकता था, 12 तक के आई थिंक. तो ठीक है, अगले साल 13 हो जाएगा तो उनको बोलेंगे 13 तक करो. बच्चे आजकल के अपनी मर्जी के फोर्स नहीं कर सकते. मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे साथ सुबह रोज 7 बजे मंदिर जाती है. अभी होती है मेरे चलने, मेरी दादी ने मेरा कोटा कंप्लीट कर दिया. क्या बोलूं इसको? इनको बोलो दादी ने तुम्हारा ब्रेकफास्ट और डिनर लंच का भी कोटा पूरा कर दिया है, खाना मत. बोला तुम्हारा पॉकेट मनी का कोटा भी पूरा कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा अभी. पॉकेट मनी बात करते. बोला मोबाइल भी मिलेगा नहीं हाथ में. So that's why demonic qualities are so many, divine are very few. इसलिए justification बहुत आता है. So this is the first justification by Arjuna. 28 वर्ष चालू होता है. He is feeling compassion for what? अरे इनको नहीं मार सकता, वो मेरे घर वाले हैं, right? He is feeling compassion मतलब करुणा, right? And compassion can be sometimes misplaced also. Unnecessary compassion देने से क्या होता है? Children get spoiled. अरे मेरा बच्चा है, वो चाहता है कि दिन भर मोबाइल देखे, मेरा बच्चा है प्यारा, उसको नहीं दूँगी तो रोएगा, दे दो उसको मोबाइल. तो क्या होता है? Spoiled. Unnecessary उसको पैसा दो हाथ में, he spoiled. Freedom दो, he spoiled. Discipline is required. Discipline means there is inconvenience. Inconvenience means what? Not so much pleasurable. It brings difficult to deal with your mind. It brings difficulty to deal with your mind, isn't it? और फिर मन रिबेल करता है, नहीं करूँगा मैं ये. लेकिन वही करना है जो मन नहीं बोलता है. जो मन बोलेगा करना है, वो नहीं करना है. Right? But Arjuna यहाँ पे he is victim of his mind. So it is 29 and then 30 we have seen the last lecture, 30th verse. किस तरह से है? अर्जुन क्या सोच रहा है कि मेरे लाइफ में अभी क्या है? लूज सिचुएशन है, लूज. विन-विन कहते हैं ना, विन-विन. लेकिन लूज कभी सुना है? अर्जुन से नहीं सुना है. ये तो प्रॉब्लम है लाइफ में. एवरीवेयर वी हियर ओनली विन-विन. तेरा भी जीत, मेरा भी जीत, चल. तेरा भी बिजनेस में फायदा, मेरा भी फायदा. विन-विन बोलते हैं ना लोग. लूज कभी सुना है? नहीं सुना है. That's why we have to hear bhagavadgita. लूज मतलब यहाँ भी हार, वहाँ भी हार, हर जगह हार ही हार दिख रहे हैं अर्जुन. Why? Because of self-centeredness. अर्जुन सोच रहा है in verse number 30 हमने देखा था निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. निमित्तानि च पश्यामि. Everywhere I am seeing the cause of my misfortune only. And this happens when we are self-centered. जब हम केवल और केवल खुद के बारे में सोचते हैं, मेरा कैसे होगा, मुझे क्या मिलेगा, फिर लास्ट में मुझे कुछ नहीं मिलेगा.
क्योंकि एक ना एक दिन तो हमारा पोल खुल जाएगा ना। दोस्ती निभानी है किसी के साथ तो सामने वाले के बारे में सोचना पड़ता है ना। क्या सोचना पड़ता है? आप केवल बोलेंगे मुझे जो अच्छा लगता है, अच्छा ये मूवी मुझे अच्छा लगता है, आगे देखने चलेंगे, अच्छा वो हिल स्टेशन मुझे अच्छा लगता है, अच्छा ये फूड मुझे अच्छा लगता है, सब तुझे अच्छा लगता है, फिर मेरा क्या है? दोस्ती होती है कैसी? नहीं होती है ना। अच्छा जापान किसका डेस्टिनेशन था, आपका क्यों था? सबका We all discussed it together and we came to a conclusion. Okay, fine. कंक्लूजन। वाह बड़ा मीटिंग हुआ। Okay, okay. So like that. Win-win situation. Win-win. Good. So that's how we have to proceed in our life. Then in the 31st verse, now he is saying, Nacha Shreyo Anupashyami Hatva Swajanam Ahave. I did not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. जब आप शास्त्रों से विरुद्ध सोचना चालू करते हैं, when you take life on your own, then such things happen. जहां उसको विक्ट्री मिलने वाला है वहां बोल रहा है कि मुझे तो मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे। कितना पागल है क्या? टोटल पागल है। और हम लोग क्या है? अरे भाई हम लोग ही हैं वो। अर्जुन मतलब यहाँ पे इसमें अभी हम लोग हैं, हम लोग पागल है। अर्जुन इज जस्ट प्लेइंग अ रोल, राइट? तो हम इस तरह से पागल हो गए हैं कि किसी को सत्संग में बुलाएंगे, मुझे लगता है क्या मिलेगा मुझे वहां जाकर। You relate the situation with your own life, then you will understand Bhagavad-gita. Not that अर्जुन का प्रॉब्लम है, अर्जुन को बैटल फाइट करना है तो हम उसको हेल्प कर रहे हैं, अर्जुन चल तू आगे बढ़, युद्ध लड़। युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं अभी यहाँ पे। आप सत्संग में किसी को बुलाते हैं, लोग कहते हैं क्या फायदा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब, 2 घंटा उधर जाके टाइम वेस्ट होगा मेरा। बोलते हैं ना लोग, पूरी दुनिया ऐसा सोचती है। हाँ बिजनेस करते हैं। एक्सेप्शन हुआ। We are the divine platform. ऐसा क्यों होता है? Because लोग जिंदगी भर अपने बारे में सोचते हैं, मेरा घर, मेरी रोटी, मेरा कपड़ा, मेरा मकान, राइट? वो ये नहीं सोचते कि जिंदगी इससे भी थोड़ा आगे है और कुछ। अपना घर, ऑफिस, परिवार, इससे भी आगे जिंदगी बहुत है। जो हमारा मल्टी लाइफ जर्नी है उसमें से एक छोटा सा स्पेक है ये, स्मॉल एटम। We have been taking so many bodies, ट्रैवलिंग जो करते हैं हम 84 लाख स्पीशीज में। मच्छर का लाइफ स्पैन कितना रहता है? ऐसा कर दिया खत्म। चींटी का कितना रहता है? Few hours, right? Or days, maybe you can say. कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्ट्स जो 1-2 घंटे के अंदर उनका खत्म हो जाते हैं। पैदा होते हैं, शादी भी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, बच्चों का शादी हो जाता है, ये मर जाता है तब तक। एक तत्व बोलते हैं ना उसको, एक तत्व, 2 तत्व, जो भी तत्व है, but 5 तत्व, 4। our lives are so insignificant. For a few years we come here, and then we think I am going to live here forever. हमारे एज में आने के बाद क्या है टाइम आपके जीवन में कितना हो गया सारा? आज 75 कंप्लीट हो गया। One question. As Arjun's duty is as a Kshatriya is to fight. Now it's like our duty. We are here like a businessman. We are supposed to do our work. But you said, and just previously you just said that this is a very small speck of our life that is there. But that is our duty. Yes, but what is your actual duty? That we have to understand. You are Kshatriya, but that designation is also to the body only. So that's why the instruction to Arjun is not just to fight the war. Later, if you go, introduction को हमने already देखा था. When you go ahead in the 8th chapter, then Krishna will say to Arjun, you not only just fight, but also remember me.
माम अनुस्मरण युद्ध च. He will give that instruction in the 8th chapter. Because first 6 chapters from 2nd chapter onwards, 2nd, 3rd, 4th, 5th, Krishna will describe how you are getting entangled in the chain of action and reaction in this world. Right. And suffering, the good and bad. Isn't it? नहीं हो रहा struggle जीवन में? Yes, it is. Are we not suffering? The reactions of what we do. Yes. Action we do and then we get the reaction. Now that's why Arjuna, Krishna will say, you have to come out of this cycle of action and reactions. And for that, you have to meditate on me. You have to become spiritual. And the instruction is not just to do your business, but along with that, remember me. You act in such a way that there's no action. Yes. Yeah. You already studied that in JSB. Yes. That is called karma. So this is how it will proceed. So now here Arjun कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि यहाँ तो सब हमारे हार ही हार होने वाली है, कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है कृष्णा, ये हरे कृष्णा चैंटिंग करने से क्या होगा? कल मैं वहाँ गया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है, हमारे हॉस्टल के वार्डन से मिलने के लिए, उनका ही चल रहा था कॉन्वोकेशन, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, तो अलग अलग लोग आके अलग अलग स्पीच दे रहे थे वहाँ पे, एक प्रोफेसर है वहाँ के बोले, I wish you all the best. You do good all in your life and be, you know, मतलब जो भी उनको कहना था, अच्छे बने, ये बने, सब कुछ आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बड़े-बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट. लोग आ रहे थे, अपना डिग्री सर्टिफिकेट लेके जा रहे थे, फोटो खींच रहे थे, बट कोई भी ये नहीं कहता है कि हाउ टू डील विथ योर माइंड, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज when you are out there in your field. When you get a lot of money, क्या करोगे उसके साथ, कैसे बिहेव करोगे, और when you get, you know, big power and position, कैसे डील करोगे उसके साथ, कोई बताता है क्या? नहीं बताता ना. और ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, यही लोग बाद में जाके उनको समझ में आता है कि जिंदगी में केवल पैसा, पोजीशन ये नहीं होता है. नाउ उस टाइम उनको समझ में आता है, माय रिलेशनशिप इज नॉट गुड विद माय वाइफ और माय फ्रेंड्स और इन द ऑफिस, व्हाट टू डू. तो जाओ अपने कॉलेज में पूछो, पढ़ाई कि नहीं, कॉलेज में पढ़ाना चाहिए ना. इंसान का अगर दिमाग ठीक नहीं रहेगा जिंदगी में तो क्या करेगा? बहुत सारा पैसा है, पोजीशन है, that cannot satisfy him if he is not happy within his mind. बाकी तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बैड हैबिट्स, एडिक्शन, ये वो फलाना फलाना, सब कुछ पढ़ाया जाता है एक्सेप्ट हाउ टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग. तो कह रहे थे नाउ यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड एंड यू विल डू दिस दैट ये फलाना फलाना बहुत कुछ कह रहे थे, यू नो. लेकिन कोई ये नहीं कहा कि यू नो हाउ ही विल बिकम गुड ह्यूमन बीइंग. Because unless you become good, आप लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं? खुद को नहीं मदद कर सकते, दुनिया को क्या मदद करेंगे? You talk about building the nation. First build yourself. खुद टूटा हुआ है, तो दुनिया को क्या बनाएगा? बराबर है कि नहीं? याद है ना स्टोरी चाइना वाला, चाइना का वॉल, कितने सेंचुरी लगा दिए उन्होंने वॉल बनाने के लिए. And you build character. It's such a simple thing. This is a small example, but पूरे civilization का भंडाफोड़ कर देते हैं. पूरा उसका पट्टी खोल दिया. क्या बोलते हैं आप उसको हिंदी में? भेद. हाँ? भेद. बता दें. बहुत ठीक है. जैसे उन्होंने बोला आपका फेवरेट स्टूडेंट. जब भी आपको कोई चैलेंज करेगा ना, ये एग्जांपल देना है, ठीक है ना? तो ना व्हाट यू हैव डन फॉर दिस, आपके पास इसके लिए क्या है? हाउ डू यू, इसलिए प्रॉपर जब 1966 में वो स्टोरी में कंप्लीट करना भूल गए. सो प्रॉपर वाज देयर, यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा फ्रॉम क्वीन स्क्वायर पार्क, और बस उधर से क्या हो गया? lot of people started. And today, ISKCON is all over the world.
So many temples, so many devotees, so many people getting inspired. How did this happen? Just by chanting, name of the Lord. That's why I'm again telling you, the religion in this age is to chant the holy names of God. Not even to study scriptures, not even to give charity, not even to perform austerity. I'm not saying that these are not, these are there, but these are there to support the chanting of the names of God. जब तक भगवान का नाम जप नहीं करोगे, कलयुग में किसी का भी स्पिरिचुअल एलिवेशन नहीं हो सकता। गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लो, बड़े-बड़े कॉलेज में आके बोलो, but if you do not know what is the purpose behind them, the purpose is to get you to chant the names of God. कल इसलिए और एक श्लोक है बृहद नारदी पुराण में, हरे नाम एव केवलम, the name of God, the name of God, the name of God. Christian में भी कहते हैं ना, even Christianity, Islam, so many religions, they say name of God. They don't say give charity or do austerity. So that is there, charity is there, austerity is there, but these are all there to support and help the principle or the primary process of religion, that is to chant the names of God. इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप कितने बड़े विद्वान हो जाए, जब तक आप भगवान के नामों का जप नहीं करेंगे, आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते. Can't. However, you may be expert in analyzing the scriptures, or you may be, big donor or big austere person, you cannot attain any, realization. Yes, your question. वासुदेव. हाँ वासुदेव. So he is also chanting name of God only. वो Vasudeva. विठ्ठल वो इतना अच्छा उनका सुनने में लगता है ना, ये नीचे गा रहे हैं और ऊपर तक सुनाई दे रहा है. लेकिन वो लोग पहले ना खाली एकादशी में दिसंबर में पंडित के लिए जाते थे आते थे, ये तो क्या है ये वाला, ये तो साल में एक बार ही आते हैं शिक्षा मिलते हैं और पंडित को पैदल जाते हैं विठ्ठल. Name of God. अभी मुझे समझ में नहीं आता ये, मेरे को बोलते आ जाओ मैं ये बताऊंगा, मतलब मैं थोड़ा दूर हो जाती हूँ, मुझे डीप दे दीजिए वो भविष्यवाणी करने के लिए. So chanting. All of you are chanting? उनका पहला How many rounds? 2 rounds. 1 round. 1 round. Half. Good. You started You are half ticket. liar. Half ticket. You got caught. Okay, half. No problem. He's chanting. By the Janmashtami, you should come to 1 round. Janmashtami is on 26th. Next to next. Krishna is approaching you. You're chanting 1 round. एक घंटा मेडिटेशन करती कभी आधा घंटा और इन द मॉर्निंग, बट जो मुझे पहले का दिया हुआ है उसके बाद आई एम सो टायर्ड, आगे बढ़ नहीं पा रही. इसलिए पहले एक माला कर लो. नमस्कार. पहले एक माला कर लो, उसके बाद जो करना है कर लो. नहीं हो सकता है क्यों? मेरे से, क्योंकि वो मेरा नाम दिया हुआ है. तो ले लो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उसके बाद जब यहाँ तक पहुँचती हूँ शाम को ले लो. शाम को ले लो. तो chanting 1 round. Actually, Prabhuji, I had started chanting Om Namah Shivaya, but then I don't know, after some days I started losing sleep. I don't know ऐसा हुआ है. So you start Om Namah Shivaya. I started, but then I stopped बीच में अभी, then वापस से वो ठीक हो गया. So then chant Hare Krishna. Hare Krishna includes Om Namah Shivaya also. नहीं तो मैं भी ओम नमः शिवाय तो मैं बहुत वर्षों से करती हूँ. 1 round of Mahamantra. See, I am not telling for my benefit. या I am not going to get any property, money, or your powers. जो I am not going to steal your powers. अर्ली मॉर्निंग में शांति में जो मेडिटेशन होता है वो शाम को या चलेगा. को मेरा But I am telling you again, the process in this age is not meditation. The process in this age to cry for the mercy of the Lord in the form of chanting His names. Even this chanting is not meditation actually. Although it is in the meditative form, but it's seeking the mercy. Please help me. Please help me. I am in a difficult situation. Are we not in difficult situation?
we are. So unless we call, so this chanting is calling. Yeah. Krishna, help me, help me. And that's Krishna likes, that God likes. As last time you said, we are there in this prison, Yes. and Krishna is there outside, and when you call his name to take you Yes. out of the prison and take you away. तो इसलिए मैं आपको पहले कह रहा हूँ, शुरुआत में कह रहा हूँ, बाद में मुझे बोलना मत. जब तक आप चैंटिंग को सीरियसली नहीं लोगे, you cannot advance in spiritual life at all. Even if you complete Gita, my whole purpose in explaining the Gita is to understand why we are chanting. जिसका नाम ले रहे हैं उसके बारे में समझो, जीवन में कठिनाइयाँ क्या है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, समझो इसके लिए. मैं क्या बोल रही हूँ, जब आप ये संस्कृत में पढ़ते हैं तो एक बार हम लोग भी साथ में पढ़ें. चलेगा तो ना? हमको क्या होएगा, दिमाग में संस्कृत इज गॉड्स लैंग्वेज. आप बोल रहे हैं, हमारा माइंड यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं. तो मैं बोलूँगा हम साथ में बोलेंगे, हाँ, ठीक है? साथ में, हाँ, ऐसा करें, ठीक है, चलेगा ना? But I want you to chant one round of Mahamantra. वो कोशिश करेगी, पर ये तो यहाँ हो जाएगा ना मेरा. जब वो कोशिश पूरी होगी, भगवान will become happy. ठीक है. तो Yes. क्या होगा, इसमें क्या है, सब बच्चों चलेगा. को भी संस्कृत का थोड़ा Yes. बहुत उच्चारण भले Sure. समझे नहीं समझे. So this is the first reason where he is saying कि मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये युद्ध That is better. चलेगा ना? चलेगा. संस्कृत We will decide में today. एक बार बोलिए, जैसे ये बोल रहे हैं तो उस टाइप में. And in this verse there is one more word. He is saying श्रेयो, न च श्रेयो. श्रेयो मतलब क्या है? Well-being, right? आप देखेंगे word to word में है कन्या. good. अभी actually देखा जाए तो what is actual good for a living entity? When he serves God, that is good. but ये सोच रहा है कि मुझे भगवान की सेवा करके क्या होगा? His intelligence is completely overtaken by Satan and he is thinking opposite. Right? And then he says in the 32nd verse. Yeah, now we decide together. Okay? Whatever you can. Yes. किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितान् राज्यभोगसुखानि च नैमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तुत्यधनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाल्या सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रति स्वजनार्दन. Yeah, somebody read the translation. O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-laws, grandsons, brother-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we desire from killing the sons of Dhritarashtra? Yes. कितना बड़ा प्रवचन दे रहा है देखो जरा. कितना बड़ा कृष्ण को लेक्चर दे रहे हैं. क्या समझते हो अपने आप को आप? Not even understand my situation? Why I can't chant Hare Krishna? I am so busy. Can't you see? From morning till night I am busy. But why we are busy, that we have to understand. किसके लिए काम कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? किसके लिए आप काम कर रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? अपने लिए. किसके लिए? लेकिन उससे सुख मिल रहा है क्या आपको? नहीं, when we do काम, that is also a meditation. हमारा ध्यान है. आपके सामने जब मृत्यु आएगा, That is also good. what? चलते उनका नाम भी लो, काम भी करो, तो किसी का बुरा ये भजन गा रहे हैं? आएगा ही नहीं. सोच. वो बॉलीवुड वाला भजन गा रहे हैं. मेरी तो यही सोच है कि काम is also meditation. Yeah, it should become meditation. When we are spiritual, then our work also becomes spiritual.
If we are not spiritual, then our work remains at the mundane level. Right? तो यहाँ पे भगवान को 3 एड्रेस नाम दिए हैं एड्रेस करने के लिए अर्जुन ने. फर्स्ट इज गोविंदा, सेकंड इज मधुसूदन, थर्ड इज जनार्दन. तो गोविंदा का अर्थ होता है वन हु गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस एंड काउज. इसके लिए गोविंद कहा गया है, शब्द का अर्थ है गोविंद. तो अर्जुन बोल रहे हैं कि यू आर द वन हु गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस, सो व्हाई आर यू नॉट गिविंग प्लेजर टू माय सेंसेस राइट नाउ. मुझे क्यों युद्ध में आप why are you engaging me in the battle? This is not pleasing to me. If you somehow tell me how to avoid this war, then I can become happy. कृष्ण को कह रहे हैं, right? गोविंद शब्द का इस्तेमाल करके. Then another word is मधुसूदन. मधुसूदन means one who kills enemies. मधु नाम के दैत्य का भगवान ने एक बार वध किया था. There was a demon by the name of Madhu. So that's why he is called demon. और कृष्ण को अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं मधुसूदन मीन्स वन हु किल्स एनिमीज. हाउ कैन आई किल माय एनिमीज? मैं कैसे अपने शत्रुओं को मार सकता हूँ अर्जुन? सॉरी कृष्ण. एंड जनार्दन मीन्स, जनार्दन का अर्थ होता है प्रोटेक्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. राइट? तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. हाउ कैन आई किल माय ओन रिलेटिव्स हु आर आल्सो अमंग द लिविंग एंटिटीज? राइट? कैसे मार सकता हूँ मैं उनको? And finally बोलते हैं what pleasure we will get. तो अभी यहाँ पे अर्जुन का हिसाब क्या हो रहा है? प्लेजर कैलकुलेशन. कितना मिलेगा आपने? Win-win. Not win-win, only win. Only win. How can I win? But Krishna is saying you can't win like this. अभी आप अगर इसको देखेंगे ठीक से, मैंने पिछली बार भी बताया था, the whole purpose of Bhagavad Gita is to, अभी हमारा ध्यान कहाँ पे लगा हुआ है? इस शरीर के ऊपर. मैं ये शरीर और मैं शरीर से संबंधित जो भी है मुझे चाहिए. The whole purpose of Bhagavad Gita is to shift our focus from this body to the soul, which is our original identity, and from soul to the super soul eventually. These are the different levels of realizations that we have to attain. अभी हम क्या सोच रहे हैं? जैसे पिंजरे में कोई पंछी बंद होता है, there is a cage and inside the cage there is a bird. Every day you are going and just cleaning the cage, but not feeding the bird inside. What will happen? The bird will die. Common sense. And that's what happening with us. We are cleaning the cage. This body is a cage. Inside this there is a soul. आप बोलेंगे ये सब क्या है? Mythology. Actually, it's not mythology. The spirituality is not called mythology actually. It is a fact of life. You want to prove? Then go and ask your all corporate peoples. उनको पूछो. मैं कल पूछने वाला था लेकिन पूछा नहीं मैंने. What are they going to do with your degree? This degree is going to make you happy? No. This degree is going to give you some facilities to live life. रोटी कपड़ा मकान देगा. But that degree doesn't guarantee your happiness in life. Happiness depends not on our possessions but on our emotions, and our emotions are decided by whom? Mind. आपका mind stable है कि unstable है? And the stability of mind, how it will become stable? When the mind gets a shelter. The shelter which is not shaky. In this world, all the shelters which we take are, sir, जैसे यहाँ पे भी आपने पेड़ लगाए हैं, कभी-कभी आप देखेंगे कमल का पत्ता रहता है ना, या फिर वो दूसरा एक पेड़ रहता है, हाँ अड़ू, उसके पत्ते के ऊपर अगर एक बूंद गिरेगा ना, it just slides down, तो स्टेबल रहता है उसके ऊपर. This is how the material world is. जहाँ पे आप शेल्टर ले रहे हैं, वही खुद पहले से हिल रहा है. आपको क्या शेल्टर देगा वो? माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते. लाखों करोड़ों रुपया भी होगा, फेसबुक में 50 लाख फॉलोअर भी रहेंगे, स्टिल यू विल बी मिजरेबल.
That is the story of Michael Jackson. क्या नहीं था उसके पास? Famous like Lord Indra. Enjoyment like heaven. Apsaras like heaven. But of course, heaven में ऐसा होता नहीं है. अगर किसी इतना ये नहीं रहता है, gross. But he was the most miserable person on the planet Earth, isn't it? सुसाइड करके मर गया ना? नहीं सुसाइड किया था। सुसाइड हाँ, सुसाइड किया था। पर अंदर से उसके बहुत ड्रग्स लेते ना तो ड्रग्स क्यों लेता था वो? If he is happy, then why he needs to take shelter of external things to become happy? His drugs indicate he is dependent on something else for his happiness. He is not happy within. डिप्रेशन में होगा। क्यों डिप्रेशन आया? उसका पैसा, पॉपुलैरिटी, फेम, फ्रेंड्स उसको डिप्रेशन से निकाल नहीं पाए. That's what I'm telling you now. If we are not dependent on God, then we are nowhere. All the shelters within this world are temporary and they are not stable. आप कभी ऐसे रोड पे गाड़ी चलाओ तो स्टेबल नहीं है, जहाँ पे बहुत गड्ढे गड्ढे हैं, चलेगा गाड़ी ऐसे क्या होता है? दिमाग खराब हो जाता है. And that is only for few meters or kilometers. But the whole life is full of potholes. जहाँ पे गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है. और कभी ऐसा बड़ा गड्ढा आएगा. एक्चुअली ऐसा हुआ उधर रायगढ़ में, आई थिंक 2-3 years बैक, एक बड़ा ये आया था, फ्लड आया था, याद है आपको? बहुत हेवी रेन्स आया था. तो एक ब्रिज था बहुत बड़ा, ब्रिज के ऊपर पानी आ गया. ब्रिज एक्चुअली ऑलरेडी टूट गया था. पानी में दिखा ही नहीं. गाड़ी आ रही थी, थोड़ा डिस्टेंस जाने में गायब हो रही थी. लाइट दिखता था दूर से. एंड देन सी हॉरर शो. गाड़ी गया, गायब. इधर गया गाड़ी. ऐसे कितने सारी गाड़ियां उसके अंदर चली गई. बाद में क्योंकि रात के समय में गाड़ियां चल रही थी ना, we will bother to stop the vehicle and check out क्या हो रहा है आगे. तो ऐसे कुछ गाड़ियां गिरने के बाद पता चला कि ये तो यार नीचे ब्रिज नहीं, पानी मतलब ब्रिज के ऊपर आ गया था, पता नहीं चला. उनको लगा था रेगुलर, क्योंकि रेगुलर जो ट्रैवल करने वाले जो है बसेस वगैरह, उनको लगा सीधा. तो फिर जिंदगी में ऐसा बड़ा गड्ढा आ जाता है एक बार. गया गया तो भगवान आ जाते हैं. इंसान को प्रॉब्लम आता है तभी भगवान आ जाते हैं. बचाओ, रहम करो. जब पावर है, शक्ति है बोलने का, तब याद नहीं आएंगे. इसीलिए बोलते हैं सुख में सिमरन करो तो दुख गाएगा. कितनी भी तकलीफ हो उसको सिमरन मतलब क्या होता है? सिमरन बोलते हैं जैसे आप भजन करते हैं, हाँ, याद करते हैं. सिमरन मतलब chanting the names of God. या, That's what I'm telling you. सुख में सिमरन करो. हाँ, सुख में सिमरन करें तो दुख गाएगा वही. तो बाद में क्या पॉइंट है? When you are about to die on the deathbed, what is it? Also, that time also good, but you can't remember that time. You know, एक grandmother थी बूढ़ी, उसको grandson कह रहा था, please chant Hare Krishna, please chant. So she's saying, can't. वो कार्टून आता है प्रभुपाद used to say this story. ये कार्टून में से देखा रहता है. तो grandson कह रहा है grandma को, please chant. She's saying can't. Prabhupada said, she can say can't, but she can chant Hare Krishna. इतना बोलने का ताकत है. Actually this is बंगाली में है वो. तो अगर आप किसी को मृत्यु शैया में जो कोई रहता है उसको बोलेंगे बोल हरे कृष्ण, बोल भगवान का नाम ले, चल तेरे को जो चाहे राम का नाम ले, नारायण का नाम ले, वो बोलेगा नहीं ले सकता. इतना बोलने का ताकत है. ये ट्रेनिंग नहीं है ना बाबा. Mind is the reservoir of all the thoughts, actions, things that you have done throughout your life. लास्ट के मरने के समय में पूरा एक्यूमुलेट होके आता है एक साथ. भगवान का नाम कभी लिया नहीं, वो कभी आएगा नहीं उधर. माइंड के सरफेस के बाद सबकॉन्शियस माइंड से ऊपर आता है कॉन्शियस माइंड. उस समय सबकॉन्शियस माइंड में फिल्म के गाने हैं,
और क्या है? बर्गर। और क्या है? पिज्जा। If it is prasad, then good. If it is not prasad, then Hare Krishna. You will become, you know, किसी होटल में कुक बन जाओगे, पिज्जा बनाने वाले। पिज्जा कुक बन जाओ, पिज्जा बनाते रहो। रोटी मेरे पास क्या है? हाँ, yes. Example of Zinda. So this is the way, right? So that's why he is calculating. मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? अरे तुझे क्या मिलने वाला है? सब कुछ मिलने वाला है अर्जुन। जिस मेरी बात तो सुन। तो मुझे क्या मिलेगा? Right? And that's why इस पर्पट में आप देखेंगे ना एक लाइन दी है प्रभात ने आगे। If you go little bit ahead in the page number मेरे पास या 56. या मेरे पास दूसरा है क्योंकि पॉकेट साइज भी है ना। या प्रभात कहते हैं इस पर्पट में 4-5 लाइन छोटी शुरुआत में। Yeah, fourth line actually, third line. Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. Barabar? Yes. But Govinda or Krishna is not meant for satisfying our senses. If we try to satisfy the senses of the Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. हिस्ट्री है बहुत बड़ा। हम बोलेंगे ऐसे कैसे? भगवान को अगर हम खिलाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा कैसे? मुझे खाना पड़ेगा ना बोलेंगे। यही तो रहस्य है जीवन का। अच्छा, घर में आपके बच्चे रहते हैं, आप पेरेंट्स रहते हैं। जब बच्चे अच्छा बिहेवियर करते हैं, अच्छी तरह रहते हैं जिंदगी में, तो आप खुश रहते हैं। अगर बच्चे ठीक से नहीं रह रहे हैं, and even if you have everything in life that you desired, still you will be miserable, isn't it? और आप अर्जुन की तरह बोलेंगे, क्या फायदा इस प्रॉपर्टी का, क्या फायदा इस जिंदगी का, इतना बड़ा बिजनेस तेरे लिए खड़ा किया। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए उनको देखकर जिंदगी को बड़ा बनाते हैं। अनंत अंबानी इनके ऊपर इतना पैसा खर्च क्यों किया? कितना किया? 5000 करोड़, राइट? क्यों किया? वही तो है उनका, और क्या है जिंदगी में, क्या है उसके लिए? लेकिन फिर भी लाइफ में क्या है? बीमारी है ना उनको कुछ, स्टिल ये स्ट्रेस। So stress you cannot avoid. अगर कल वो ऐसा सोचे कि कृष्ण is my son, then he can be happy. Why? Because Krishna is not going to get any such diseases, and he will be permanent son. That's why Yashoda and Nanda Baba or Vasudeva Devaki, they wanted such a child who will be like God only. So Krishna said, there is no other like me. I only personally come and take birth. Every Janmashtami. That's how Krishna incarnates. मेरे जैसा और कोई नहीं है, मैं खुद आऊँगा। When I become your son, you will become happy eternally, forever. मैं तो कभी बीमार नहीं करूँगा, बूढ़ा नहीं होऊंगा। हमारा बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, बीमार गिरेगा, देख हमारा मुँह लटकेगा, मेरा बच्चा। आपका तो पहले है ही नहीं वो, पहली बात समझ लो। He is one of the Jivatma is traveling in this universe. घूमते घूमते आपके घर में आ गया, राइट? आपका बच्चा बन गया, और आपका है क्या वो? सेवा है सिर्फ। You are giving some service to him and then he will go on his way. तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या मिलेगा? मेरे सेंसेस कैसे खुश होंगे? यहाँ पे दो चीजें हैं, प्रभुपाद आगे लिखते हैं। Yeah. The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. But when one takes the opposite way, namely when one tries to satisfy the senses of the Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda all desires of the living entities are satisfied. ये आपने महाभारत में 5 टाइम सुना होगा, दुर्वास मुनि का, और जो द्रौपदी के पास जो अक्षय पात्र था, ये तो सुना है ना, अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास, नहीं सुना है? महाभारत मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो सुना नहीं। टीवी का वो वर्जन देखा मगर उसमें शायद वो नहीं था, नहीं रहेगा, तो बहुत बाद में आता है, वनवास में आता है। So Draupadi actually when Pandavas they are in the forest, उनके पास कुछ नहीं, फॉरेस्ट में क्या मिलेगा? फॉरेस्ट में जो भी यहाँ वहाँ जंगल से कंदमूल फल फूल या भिक्षा मांगी नहीं से मिल गया। Actually Krishna gave Akshay Patra to
पांडवास अक्षय पात्र में, अक्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया जो दिन है ना, दैट इज द डे व्हेन दे गॉट द अक्षय पात्र। तो उस अक्षय पात्र में से भोजन निकलता था जितना चाहिए उतना। बट टिल व्हेन, टिल द टाइम द्रौपदी टेक्स हर व्हाटएवर लंच और डिनर, एक बार द्रौपदी ने खा लिया उसके बाद उस दिन के लिए होटल के दरवाजे बंद हो गए। तो पांडवास दे वर हैविंग दिस प्रसादम थ्रू द अक्षय पात्र। एक दिन दुर्योधन क्या करता है, बोलता है कि इनको थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, अपमानित करना है। तो दुर्वास मुनि को बोलता है कि आप क्या करो, आपके 60,000 डिसाइपल्स, 60,000 डिसाइपल के साथ आप विजिट करो पांडवास को फॉरेस्ट में, become their guest and ask them for the food. But when Draupadi is done with her prasadam, एक बार उसने ले लिया, जाएंगे मिलेगा नहीं, दुर्वास मुनि गुस्सा हो जाएंगे। He is a sage known for getting angry immediately and he will curse them. हाँ मजा आएगा, ऐसा दुर्योधन को लगा। तो उसने भेज दिया। उस एग्जैक्टली उस टाइम पे द्रौपदी ने भोजन दे लिया था। दुर्वास मुनि आए, बोले I have come with my 60,000 disciples. Please give us prasadam. तो बोली खत्म हो गया आज का, कैसे करेंगे अधिक सत्कार, और गुस्सा हो गए तो so that time devotees what they do when they are in trouble, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna appeared, as soon as Krishna appeared, तो उसमें बीच में क्या हुआ, बड़ा आवाज आ रहा है अंदर, पता चल गया कृष्ण आ गए हैं। You are all right? Yes. Still you have energy? Yes. पक्का? You have energy? 200%. 201. Is a lot of energy. ऐसा करना थोड़ा सा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। एक्चुअली मुझे स्टेज करना था। So now what happened? This is a custom in the Vedic culture that noon lunch when you want to take, before that there is a bath in the river. Actually वो टाइम ऐसा रहता था, स्नान करने के बाद प्रसाद देने का। अभी तो क्या है, बेटी क्या बोलते हैं उसको, सब लोग भी लेते हैं, क्यों टेक कौन लेते हैं, डरो मत यार, कुछ बोलोगे नहीं। टी स्टॉप कर दिया, सुबह एक चाय, शाम को एक कॉफी, एकदम। सो उन्होंने कहा कि आप जाओ स्नान करके आ जाओ, फिर आपको हम भोजन तैयार करेंगे। मीन टाइम कृष्ण के मैंने आस्क्ड द्रौपदी, आई वांट सम प्रसादम टू ईट। द्रौपदी ने कहा प्रसादम, यहाँ पे ऑलरेडी 60,000 लोग आए हैं, वो प्रसाद मांग रहे हैं, आपको बुला है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आप प्रसाद मांग रहे हैं मुझसे। श्री कृष्ण ऐसे है, when you call him to solve your problem, बोलेंगे भगवान प्लीज मेरे जीवन में समस्या है, प्रसाद मांगेंगे। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग, क्या बोलते हैं उसको, इस पे बॉम्बे दूरदर्शन पे एक एनिमेशन फिल्म आता हाँ इज वेरी फेमस पास्ट टाइम, काफी प्रचलित है, एक दाना द्रौपदी बहुत पहले आती थी, बहुत वेरी क्वाइट पॉपुलर। बट इसका सिद्धांत समझिए, हम लोग क्या करते हैं खाली स्टोरी समझ के भूल जाते हैं। जब कृष्ण आपके जीवन में आते हैं, यू कॉल कृष्णा, आई एम इन ट्रबल प्लीज हेल्प मी, कृष्णा कम्स एंड टेल्स गिव मी प्रसाद। आप बोलते हैं क्या काय का प्रसाद, मेरे पास खाने को वांदे हैं, इधर रहने के वांदे हैं, मेरा जिंदगी, कृष्ण कहते हैं इंस्टॉल मी इन योर होम, वर्शिप मी। छोटा आपको दिया, ऐसे बड़े बड़े रखते हैं लोग घर पे, ये जो फॉर्म दिया ना आपको, इसके बड़े बड़े इतने बड़े बड़े, या फिर राधा कृष्ण के लेडीज बड़े बड़े, या गौर निताई के बड़े बड़े। तो लोग कहते हैं कि जिंदगी में समस्या है और आप हमारे घर में आके सेटल होना चाहते हो, इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू कम हियर राइट नाउ, पहले मेरे को सेटल करो। भगवान कहते हैं पहले मेरे को सेटल करो, फर्स्ट सेटल मी देन यू विल सेटल। आप समझे कि नहीं? Yes. हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी में मैं पहले सेटल हो जाऊंगा, दिस इज नॉट द वे। फर्स्ट यू सेटल गॉड इन योर हार्ट,
then only you will settle. Otherwise, there is no way. And the whole world is thinking like this only. पहले मैं जिंदगी के अपने सारे काम कर लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, यहाँ वहाँ दुनिया सब करूंगा, लास्ट में भगवान। अरे तुम मूर्ख हो, पहले भगवान को लाओ, नहीं तो तुम जितना बनाओगे ना बड़ा एम्पायर भी, और सोचोगे लास्ट में भगवान को। बहुत सारे लोग तो लास्ट में भगवान को सोचते भी नहीं है। स्पीकर ओ ही सेइंग ज्यादा आवाज हो गया। नहीं उसमें अच्छा, तो डर क्यों रहा है? शर्मा रहा है। अच्छा दिल्ली जा रहे इसलिए? नहीं वो अभी बीच क्लीन अप करके आया, सो shower. Every Sunday he goes for beach cleanup. So he doesn't want to come here because he's Not So are you getting? First we have to settle God in our heart. Otherwise, take the example of Michael Jackson always. He didn't try to settle himself with God. Then that's why कितने ऐसे एग्जाम्पल है दुनिया में, कितने एग्जाम्पल हैं। Every day you will get to hear something, some news here and there. So ये भगवान आए तो लेके प्रसाद दो। क्या है, कौन सा प्रसाद? कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए। You want प्रसाद? ऑलरेडी समस्या है यहाँ पे। तो उस समय भगवान ने बोला, अरे you go and search ना, कुछ तो मिलेगा। You go inside. और एक्चुअली नहीं था। जो अभी आप समझो, आपने प्रसाद के बाद आप वेजल क्लीनिंग करते हैं, अच्छा क्लीनिंग करते हैं ना, थोड़ी उसमें कुछ छूटेगा। You clean everything nicely, right? तो द्रौपदी ने अक्षय पात्र अच्छी तरह क्लीन करके रखा होगा ना। फिर भी एक कोई कहता है कि वेजिटेबल का एक छोटा सा लीफ का टुकड़ा मिला या कोई ग्रेन मिला, कैसे आ गया वहां से? वहां पे कैसे आ गया? आपने अच्छी तरह साफ करके कैसे आ गया? It is Krishna only who gives you the facility. It is Krishna only who will satisfy the hunger of all the 6,000 sages. तो वही अंदर बोली, हाँ एक है वहाँ पे, कैसे रहा पता नहीं चला। कृष्णा ने बोली वहाँ पे रख दिया वो, नाइस मिस्टिकल पोटेंसी। इन्हें वही भगवान ने खाया। सी हमारे पास जो भी है वो हमारा है नहीं, इतना समझ लो। जो भी रहता है ना उनका ही दिया हुआ रहता है, हम उठाते और देते हैं, कहते मैंने दिया। अरे आपने नहीं दिया, वो भगवान का है। बट स्टिल गॉड लव्स दैट रेसिप्रोकेशन। आप समझे नहीं समझे? आज आपके घर में बच्चे हैं, उनका क्या है? सब कुछ आपने दिया हुआ है ना उनको। पर वही बच्चे जब समझो से फॉर एग्जांपल आप मार्केट से कुछ लेके आ गए, कुछ फ्रूट्स लेके आ गए और उसी को है ना उसने अच्छी तरह से बना सलाद बना दिया, कुछ या कुछ फ्रूट का जूस बनाया। बिफोर ही टेक्स दैट आपको बोला, पापा एक ले लो थोड़ा एक गिलास को ना। कैसा लगता है? बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पापा अगर मांगेंगे तो भी नहीं दूंगा मैं, ये मेरा है। पापा वो तो तेरा है, मैंने तेरे को पैसा दिया, तू लेके आया, तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, तेरा है ये, मेरा है, नहीं दूंगा मैं। Some kids are like that. So these are the non-devotees. सारा संसार में जो भी चीजें भगवान ने दिया हुआ है हमको, पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरा है। फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, भगवान कुछ बोलते नहीं। पर जब दूसरों के हाथ छीना झपट्टी करोगे तो बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? दूसरों का उठा के खाना, इधर से उठा के खाना, ये मेरा है, So this is what happening here. In this, भगवान कह रहे हैं कि Prabhupada is saying that when you satisfy God, you will be satisfied. Everything, whole world will be satisfied. तो उस समय क्या होता है फिर? जो वहाँ पे स्नान कर रहे सारे sages, they become, उनको लगता है कि मतलब वो हाँ निकालते हैं ना आवाज, क्या बोलते हैं? हाँ आप ऐसे करके पेट भर गया। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोलते कि जाओ बुला के लेके आओ किसको? Krishna says, tells to Bhimsen, go and call all the sages. Bhimsen जाते गदा लेकर, प्रसादम is ready. वो बोलते पेट भर गया, अभी क्या खाएंगे हम लोग? और वो डर जाते हैं, बोलेंगे अभी अगर मना किया ना भीमसेन गदा से मारेगा हमको। And all run away from there. All the sages. So this is the pastime actually here indicated that
अर्जुन सोच रहा है कि मैं पहले अपने आप को सेटल करता हूँ, कृष्ण कह रहे हैं अरे पागल पहले मेरे को सेटल कर, जो मैं कह रहा हूँ सुन। इसलिए बिफोर स्टार्टिंग योर डे इफ यू कैन चैंट 1 राउंड 2 राउंड 4 राउंड्स, हम लोग 16 करते हैं, डरने का नहीं, कुछ भी नहीं है 16। 2 घंटा थिएटर में मूवी देखते हैं, कुछ लगता है क्या? Because that has become part of your system. Similarly, when this becomes part of your system, और इसके बहुत फायदे हैं, उसके तो कुछ भी फायदा नहीं है, उससे तो डिजायर आते हैं बहुत सारे, दुनिया में ये चाहिए वो चाहिए, इतना सारा एक्सपेंशन कहाँ से हुआ है? ये सब सोशल मीडिया से हुआ है ना। जो चीज आपने कभी देखी नहीं आपको दिखाते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, ये खरीदो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सब नहीं दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं जाएंगे ना, चुपचाप बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, you will chant, right? But that's not happening, but that is happening here right now. So this is the way. तो इस तरह से इसमें ये बताया गया है। And then थोड़ा आगे हम जाएंगे और एक यहाँ पे चीज लिखी हुई है, if you can find out this line, everyone wants to show his opulence to his friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. मिला? थोड़ा आगे आगे। Prabhupada says this is a typical calculation of material life. बहुत बड़ा विज्ञान है इसमें, आप प्रभुपाद के पर्पस सिस्टमैटिकली एनालाइज करो। इसमें क्या दिखाया गया बोलेंगे क्या? पूरा मार्केटिंग इंडस्ट्री, डू यू नो? पूरा मार्केटिंग इंडस्ट्री का सीक्रेट है इसमें। जितना भी सोशल मीडिया चलता है ना, इसका सीक्रेट क्या है? दिस इज सीक्रेट हियर। क्या समझेंगे? नहीं समझे अभी तक? वो किधर गई? आई नहीं आज लोग? रूबी। हाँ रूबी माता जी। तो दे रहे थे ना एग्जांपल लास्ट टाइम, पीपल नीड वैलिडेशन। यस, दिस इज व्हाट एक्सप्लेन हियर। अगर आपके पास समझो बहुत सारा चीज है, यू नो, जब तक लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा मेरे पास ये, आपको मजा कैसे आएगा? हाउ यू विल एंजॉय लाइफ? आपको बोला जाए जाओ उस माउंटेन, एक दूर लोनली प्लेस में माउंटेन है, उधर जाके रहो, क्यों रहेंगे आप उधर? जिंदगी का मजा किसमें है? वैलिडेशन लो, दिखाने में मजा है। मेरे घर में नया सोफा आया है, जब तक 4 लोग आगे बैठेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं वाह बड़ा नाइस सोफा, अच्छा है, जापान से लेके वाह जापान से। See, this is material life. अर्जुन सोच रहा है कि मैं अगर युद्ध करूंगा, समझो if I fight battle, इसमें सब लोग मर गए मेरे, तो मैं किसको 99% लोग मर रहे उसके सारे, किसको दिखाऊंगा मैं? फिर लाइफ का मजा क्या है? When I am king, when people see and salute me, especially those who are my relatives, friends, देखा? अपना क्या मेरी मतलब क्या है, शान आन बान क्या बोलते हैं उसको, कैसे मजा आएगा बोलिए? This is what Arjun is thinking, and Prabhupada says this is the typical calculation of material life. This is social media. इसलिए प्रॉस्पर कर रहे हैं ना, इधर से उड़ाया हमारे सीक्रेट भगवदगीता, बराबर है क्या? एक्सपांड कर दिया उसको, इतना एक्सपांड हो गया, एक बार आपका वीकनेस मालूम पड़ गया। इसलिए देखिए ऑल द एड्स व्हिच रन अराउंड, उसमें एक लड़की तो पक्का रहेगी, because that is the weakness of men's. मतलब अपोजिट जेंडर को अटैक कैसे करना है, those ads which are you know जैसे पाउडर है, पाउडर के ऐड में चलो ठीक है, पाउडर के ऐड में मान लेते हैं पाउडर लगा के आप गोरे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, जो भी है अच्छे दिखेंगे, फ्रेग्रेंस आएगा तो आप अट्रैक्ट करेंगे। और आपको पता है कार के ऐड में ये छाता, एक मैं आपको दिया था, एग्जांपल नहीं दिया था आपको, मैं यूज्ड टू ट्रैवल टू खोपोली ड्यूरिंग समर सीजन, अप्रैल से स्टार्ट हो गया ऐड किसका, और रेनकोट का छाते का, वो रेलवे प्लेटफॉर्म के इस पे आता था और ट्रेन के ऊपर आता था, और छाते में पता है कौन दिखते थे?
लड़का खड़ा है, सॉरी लड़की खड़ी है छाता लेकर, किसी ऑपोजिट जेंडर के ऑपोजिट कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी दे एक्सप्लोइटिंग, लड़की खड़ी है छाता लेकर, लड़का गुलाब दे रहा है, एंड जो देखने वाले लोग हैं वो क्या देखते हैं, वाओ मतलब ये छाता अगर लिया तो मैं भी गुलाब लेकर, मतलब मैं भी, दिस इज हाउ पीपल रिलेट, दिस इज योर मॉडल ऑफ सक्सेस। एक्चुअल लाइफ में क्या है सक्सेस, मतलब मॉडल क्या है वो आपको मालूम है, बट अब इमेजिन करना है तो फिर लगा लो छाता है और रेनकोट में दोनों बैठे हैं, उसको अरे रेनकोट बारिश से बचाने के लिए होता है चाहे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, पहना तो उसका रेनकोट, बट एड सेल नहीं होगा, what will sell, what is most appealing to you, what is most appealing to you, they know, they have found out the weakness, the weakest point, the weakest link, तो घड़ी का ऐड होता है, गाड़ी का ऐड होता है, हर जगह आपको मिलेगा, no correction at all, but they exploit this tendency, this is typical calculation of material life, and that's what Arjun is thinking, कैसे होगा, मैं कैसे enjoy करूँगा, this is one, दो है इसमें, this is first, and second you go little ahead, थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगा, प्रॉपर वहाँ पे लिखते हैं, the transcendental life however is different. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accept all kinds of opulences for the service of the Lord. And if the Lord is not willing, he should not accept a farthing. भगवान में किससे अपोजिट रहता है? See, those who are satisfied within their heart, they don't need any external paraphernalia to help them become happy. आज पूरी दुनिया को क्या चाहिए? बाहर की चीजें चाहिए, पर वो नहीं मिलेगा तो बोलते मेरी जिंदगी कैसे होगा? आज अब हटा दो सारा सोशल मीडिया सोसाइटी से, people can't live only, हटा दो सारा, बोलो कि पुराने जमाने में जाओ, कौन से न्यूज़पेपर वाले, they can't live only, some people are so addict, सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूस, मतलब कुछ है लोग, मतलब मैं जब भी देखता हूँ कभी कंटिन्यूसली ऑनलाइन रहेंगे 24/7, मतलब अगर भगवान ने सोने के लिए नींद बनाया तो सो जाते हैं, पूछे इनको कितना वीडियो गेम खेलते हैं, उठ के देखते हैं, आपको उठ के भी देखते हैं, तो मैसेज आएगा, हाँ मतलब they are like Krishna has come, Krishna, where is God? Oh my God, God has come, the God is there, whatever, वो उनका कोई पैरामोर रहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैसेज आया, wow, I am so happy, मैसेज नहीं आया, I am so miserable, hey, why you want to become happy with that one message? एक दिन वो मैसेज आना बंद ही हो जाएगा, जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है मैसेज ब्लॉक हो जाता है सीधा, कि वॉर है वॉर, यू डू नॉट नो बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेटल्ड। आज का यंग जनरेशन है, संभालो, हो रहा चैन अमन, डर गए पूरा। आज का जो जनरेशन है इज सो हॉरिबल, वो मतलब वॉर, ऐसा खतरनाक वॉर है, ये सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक मैसेज आपको जिंदगी बनाएगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा, सोचते हैं लोग। व्हाट मैसेज, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, पीपल बिकम रेस्टलेस। पहले के जमाने में लेटर जाता था, महीनों महीनों रिप्लाई नहीं आता था, अभी 15 मिनट आधा घंटा रिप्लाई नहीं आया तो बिकम रेस्टलेस। You have become so much dependent on someone else. पहले क्या होता है कि पहले भी था, लेकिन वो जो टाइम फ्रेम था वो बहुत ज्यादा था। अभी people don't have the patience, instant, and they think like no, ये app डाउनलोड किया, ऐप पर से निकाल दो। तो when you conversing उनसे बात भी करते हो ना, तो like no, within a there is a neighbor आया है, तो she was married उसका, तो उसके साथ आप बात करो, तो within time span is what, 30-40 seconds. She listens to you and like then again, then I say, I told once, either you do your rap or you talk to me, or like the phone is on. Either लगा के रखता है, हाँ, I said you're talking to me or you're talking to the phone. Then no, I'm talking to you. I said then switch off the phone. तो उनको कैसा लगता है? What is their mentality? कि this is how the life you live. यही जिंदगी है. Yeah, they want, whoever the person wants to talk to you, but
It's not that they want to misbehave or they have any, of course. but because they're already. नहीं, and second thing that is how they ignore you. मतलब कहते हैं ना, that is how they, जैसे आप बात कर रहे हो, हमको कुछ समझाते हो, when they are not interested in, तो वो बोलते हैं thank you. तो लेक्चर में लोग क्या करते हैं मालूम है कि नहीं आपको? किसका? लेक्चर जब चलता है आप तो यहाँ पे 4-5 लोग हैं, इसलिए कुछ कर नहीं सकते। जो मैं कभी सत्संग लेता हूँ जहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 150-200 लोग रहते हैं, सामने वाले 4-5 मतलब 2-3 लाइन से आई कैन सी देम, पीछे क्या चल रहा है भगवान जाने, वो लोग बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ये भी सामने बैठे हैं इसलिए शांति से बैठे हैं। तो एक पूरा कवर कर देते हो एक टूर्नामेंट। सी इसलिए हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरों के ऊपर कि आवर लाइफ आर नॉट इन हम लोग खुद मतलब जी नहीं सकते खुद से, इतना डिपेंडेंस इज वेरी बैड। और वो एक्चुअली भगवान छीन लेते हैं नो डाउट, इवेंचुअली आपका वो अगर आप आएंगे भगवान से प्रे करेंगे, अदरवाइज क्या होता है देखो, या तो आपको डिपेंड करना है भगवान के ऊपर या ड्रग्स के ऊपर, ओनली 2 थिंग्स कैन हैपन, बिकॉज़ यू कैन डिपेंड ऑन पीपल, especially those who are not devotees. Non-devotees के ऊपर depend, you can rely on them because they can anytime change. लोग कभी भी चेंज हो जाते हैं। आज आपको लगेगा he is my best friend. जिंदगी मेरा इसके लिए मैंने sacrifice कभी भी चेंज नहीं होगा। No guarantee. मैंने देखे हैं कि इतने घर लोग साथ में रहते हैं पर there is cold war. बात नहीं करते पति पत्नी। भोजन बनाया रहेगा, वो बना के पत्नी वहां रख देगी क्योंकि अभी क्या करें गृहस्थ धर्म है, थोड़ा सा पति के लिए भोजन बनाना, वो भी कुछ घर में नहीं रहता जहाँ पे बहुत सारे सेवक रहते हैं, बना के वहां रख देंगे, पति आएगा चुपचाप खाएगा चला जाएगा, वो अपनी दुनिया में खाली बोलो आपके व्हाट्सएप का पासवर्ड शेयर करो, जस्ट से एनी दे कैन शेयर, समझना वो आपका है, नहीं करेंगे समझ जाना। हरे कृष्ण। Further details are with WhatsApp. Subjected to Meta. Meta will give you all the figures and facts. So this is one, and the second one we are winding up in 5 minutes. And the second one is थोड़ा आगे जाएंगे आपको दिखेगा वहाँ पे किधर गया? Yeah. Arjun did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. लो ये दूसरा हो गया। पहली चीज तो ये है कि हम दुनिया में क्या करना चाहते हैं, पूरा तमाशा करना चाहते हैं, इन द सेंस कि दिखाना चाहते हैं। See, this is all boiled down to our so-called self-esteem or so-called feeling of superiority. This kind of level of intoxication, sense gratification. मजा है, इसलिए आप देखिए बड़े-बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है उनको, मालूम है क्या आपको? आई एम द मंत्री ऑफ दिस प्लेस, वाओ, these many people under me, they can't do anything without my permission. ये बहुत बड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन है, राइट? तो दिस इज वन। एंड सेकंड, अभी भगवान जब बोल रहे हैं कि आप फाइट करो, even though it is not pleasing to you, but still you do for me because I want it. तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन से ऐसा जो टास्क है ना जो थैंकलेस है, जो मुझे प्रॉब्लम देगा, मैं नहीं करना चाहता, अगर करना है तो आप करो। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। से फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यू विल गेट एग्जाम्पल देयर, सब्जी कटिंग में भी मिलेगा आपको। आप प्रसाद बांटने के लिए लाइन में, मतलब यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, पीपल आर इन द क्यू। अब ऐसा होगा वहां पे कि उधर आपका कोई फ्रेंड आ गया, इसमें से लंबा क्यू है, तो बोलेगा ए देना मुझे जल्दी, थोड़ा मुझे जाना है, कहाँ जाना है, भी दे दो, सोचना है जाके। नहीं और एक्स्ट्रा भी मांगते हैं। हाँ एक्स्ट्रा भी मांगते हैं। मेरा हस्बैंड बांटता है ना जब भी मंदिर में, हाँ तो बहुत परेशान हो जाता है। हाँ, you got the example। एक तो एक्स्ट्रा मांगेंगे, लाइन तोड़ेंगे, या अपने 4 लोगों को लेके आएंगे, खुद भी आएंगे लाइन तोड़ के, 4 लोगों को लेके आएंगे आगे। So that time you get irritated, इसलिए मुझे right? अभी आपका जो ऑथोरिटी रहेगा, you get irritated,
बट योर अथॉरिटी विल से आपको सेवा दिया है करो। आप बोलेंगे अरे यार ये सेवा बहुत किरकिरी है यार, बहुत इसमें बहुत झंझट है, आई डोंट वांट टू डू दिस, गिव मी समथिंग एल्स, बेटर आई एम कटिंग सब्जीज। बट अथॉरिटी सब्जी कट करना आना भी चाहिए। मंदिर तो में उंगली कटना कर देंगे। आ जाते हैं। हम लोग ज्यादा वही काट कूट के सीखे हैं। कट का मतलब कोई ऐसा अनइवन शेप नहीं, नहीं जो पर्टिकुलर साइज दिया उसके हिसाब से काटना है। बहुत बड़ा अच्छा फिनिशिंग होता था, मेरा फिनिशिंग बहुत गंदा होता था। हमारे कुछ स्टाफ लोग बोले तो धनिया काट के लाओगे थोड़ा सा, ये कुछ है ऐसा पाउडर करते हैं जैसे आटा बनाएंगे ना, फाइन चॉप में बोला आटा है क्या ये, हाँ, बहुत मतलब थोड़ा मोटा, ज्यादा पतला नहीं, कुछ लोग इतना मोटा मोटा काट के देते हैं चटनी बनाने के लिए। सो नॉट लाइक दैट। सो व्हेरेवर देयर इज थैंकलेस टास्क which is not giving, again not giving pleasure to you because you want pleasure as per your convenience. यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं अच्छा ठीक है आप बोलते हैं सही है, उनको मारना चाहिए because they are on the opposite side, they are on the side of religion, that is all okay, but मैं क्यों करूँ ये सेवा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा ना कल, अर्जुन ने इन लोगों को मारा, आप मारो ना, you fight, you do this thankless seva. This is what happened in the Prashadam queue. आप बोले मैं नहीं करूँगा ऐसे, मैंने बड़ा टेंशन वाला काम है यार, क्यों मैंने बोला सेवा चाहिए, अच्छा था मैं जन्माष्टमी दिन पे घर में बैठता और कीर्तन सुनता। You don't want to do anything you know which goes against your convenience. ये मैंने एक एग्जांपल दिया, now you can find out your own examples in your life. जैसे हाँ वो एग्जांपल एक होता है सास बहू का अपना सेम। When mother-in-law wants to correct daughter-in-law, what she will do? She will correct daughter. Sometimes daughter will get irritated. क्या बार-बार मेरे को बोलती रहती है? बोल ना सर डायरेक्ट बहू को, नहीं बोल सकती। क्यों? जवाब मिलेगा। लाइव एग्जांपल नहीं बोल सकते क्यों? जवाब मिलेगा वापस। रिलेशनशिप मेंटेन करना है ना? You have to be in the good books now. Yeah, good books. You don't be in the, you don't want to be in the bad, right? ये आप हर जगह है, आप बोलेंगे कि घर पे होता नहीं, इंस्टीट्यूशन लेवल पे आओ, you come to this, मतलब ISKCON is good संस्था, but क्या करेंगे, मैनेजमेंट जहाँ पे आता है वहाँ पे ये सब होता ही है। This happens in दूसरे office के also. कंधे पे बंदूक लग के। This happens in office also. Everywhere, ऑफिस में तो ज़्यादा होता है। हाँ, वो उसको प्यून को डांटेगा, वो पानी ये पानी ऐसे क्यों लाया, अरे ऐसे क्यों, मतलब बोलना उसको है पर बोलेगा इसको, समझ जाएगा, समझदार को इशारा काफी फिर होता उसको मैसेज मिल जाता है, फिर ही स्टार्ट रेज्यूमे लिखना शुरू कर है। देता ये तो आपने बहुत सिंपल चीजें कही हैं, लोग इसके ऊपर वॉर करते हैं, महीनों में तक कोल्ड वॉर चलता है। यू आर लिविंग इन वन फैमिली, 4-5 मेंबर है, उसमें कोल्ड वॉर करके कैसे जियोगे आप? लाइफ बिकम्स मिजरेबल, दैट्स व्हाट हैपनिंग, बिकॉज़ वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन थिंकिंग कि मैं अगर खुश हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। नहीं जी, लाइफ का कैलकुलेशन अलग है। आप खुश होने से आप खुश नहीं होंगे, भगवान को जब खुश करेंगे आप देन विल बी हैप्पी। तो ये इतना डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना लोगों को, बिकॉज़ दे हैव बीन थिंकिंग थ्रूआउट देयर लाइफ कि मुझे खुश होना है, मुझे खुश होना है। आपको खुश होना है, दैट इज योर बर्थ राइट, बिकॉज़ वेदांत सूत्र में कहा गया आनंदमयो भैसात, टू बिकम हैप्पी इज राइट ऑफ द लिविंग एंटिटी, बट हाउ, व्हाट इज द वे? दिस इज द वे। हरे कृष्ण। So this is how Arjuna is struggling with his emotions. So when Arya comes back from Delhi after 4 years, है, finish. इसका एक लास्ट पार्ट है 4 पैराग्राफ लाइन का, that we will take next time. अभी नेक्स्ट टाइम 2 हफ्ते बाद आएगा। We can do it before also, in between. Next week is what? नेक्स्ट वीक We are not there. We are going to रक्षा Delhi बंधन। और दिल्ली रक्षाबंधन। no, to तो आर्य को छोड़ने जा रहे हैं। No problem. And उसके बाद वाला संडे मेरा जन्माष्टमी है। They are coming to ISKCON to do सेवा। नहीं, that is मतलब क्लास तो नहीं होगा। नहीं होगा तो भी they are coming for सेवा, that's the good news. पर हमारा You want to come? हमारा You want to come for it? योगा में सेवा। ना बात हो, खाओ मत सिर्फ। प्रसाद के लिए, हाँ प्रसाद से आपको सेवा करने आना है? नहीं, बांटने। पर मैं खाऊंगा तो आप बांटोगे ना। नहीं खा सकते हो, तो वो एकादशी वाला रहता है, ऐसा रहता है बटर हलवा वो एकादशी का। You will not get this anywhere, मतलब
और उस दिन तो सब फास्टिंग करते हैं, आप ही खाओगे उस दिन। मतलब अगर मैं खाऊंगा नहीं तो बांटोगे कैसे? खाने के लिए लाइन होगी तो ही बांटोगे ना। तो पंक्ति महाराज से बात कर लो आप। Tell that one more Seva. for yeah, he want to come. Come. और किसका है? मतलब आप लोग already told them. want to go for Seva. You also coming? Huh? Yes, sir. You have to tell me like immediately because the slots are filling. Okay, relax बाबा, अभी यंग है। The young, नहीं, he's already come for Seva before. young, यंग को ही करना चाहिए। मतलब उस दिन उसका क्या स्केड्यूल देख लो। You are student? I just finished my graduation. तो you should do. If you have मेरा other बेटा plan, पहले that करता था, इतना ओवर काम का माता जी ने प्रेशर स्टैम्प नहीं मार कर दिया। पाता है सेवा। That's what I'm saying. जबरदस्ती मत करो यार। गोवा जा रहा है. गोवा जा रहा है? वहाँ पर सेवा करेगा। इसको गोवा में भी। किसकी? You can't escape. लेकिन start maybe Yeah. Go Actually- there and do Seva. गोवा में भी कर सकता है। अरे यार तुम लोग चिल मारो ना, तुम लोग अपना अपना काम से काम रखो ना. आपके टी शर्ट में गोवा है क्या? नहीं, राजस्थान है। डेजर्ट। नहीं, Texas. तुम Texas है। तुम कहीं सेवा करो तो बोलो फिर. तुम तो पहले सेवा करो तो बोलो. No, he's coming ना? कहाँ से? He's coming, he's coming. He's coming. नहीं young खाने सेवा आ रहा है, वो खाने की सेवा. चलेगा ना, खाने के बाद सेवा करेंगे। खाने की सेवन के लिए यार. नहीं दोनों करेगा, दोनों करेगा। मैं खाने की सेवा दे रहा ये लोग बांटने वाले हैं, जितना चाहिए उतना ले लेना। नहीं, आपने अभी तो बोला ये लाइन में नहीं तो लाइन तोड़ने नहीं, फिर वापस भेजेंगे। और डबल भी नहीं देंगे. डबल भी नहीं दो बार नहीं, डबल मिलता है। For that again you come in line. प्रभु जी मुझे डबल मिली। You have to come in line again. You call me, I will break my rules for you. Hare Krishna. So we will continue next time. Yes. Happy Krishna Janmashtami to all of you. Hare Krishna. So we will do kirtan. Yes. So जन्माष्टमी तक आप ये ग्राउंड पे आ जाएंगे, पक्का। हरे कृष्ण। He's given a target for. He's given a target for. मेरे को एक इंग्लिश चाहिए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare
की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. Just imagine if there is only Gita lecture and no Kirtan, how it will be? नहीं, कीर्तन होना चाहिए। Right? Only Gita lecture, no Kirtans. मुझे लगा कि only कीर्तन नो गीता। So Kirtan is so important, chanting of the names of God. Without that, the Gita study is not complete. Yes. So that's the essence. That's why I am telling you again and again, chant Hare Krishna. हरे Hare Krishna.